Nishan Sahib are performed. And on the festive front, among all pompous celebrations, Baisakhi Mela is something that attracts and fascinates everyone. Happy with harvest and ensuing prosperity, men and women dress themselves in the fanciest clothes and participate in Baisakhi Mela with joy and gusto. Bhangra and Gidda performances are most fascinating features of Baisakhi. Other activities that entice people are races, wrestling, singing, bouts, etc. Enjoyment of folk musical instruments like Vanjali, Dilgoja, Iktara are also very attractive activities of this festival. Stalls of village craft, beautiful stuff, and food are major crowd puller attractions of this Mela. It is just not only Punjab that thrills on the tunes of Punjabi beats, but huge Sikh diaspora in countries around the world has made Baisakhi Mela globally popular. So let's also enjoy the celebrations of this festival by saying thank you. Thank you, ma'am. Thank you for giving that vital information and setting the ball rolling for this evening. You know, Baisakhi is dance, Baisakhi is joy, Baisakhi is music, and yes, it is a good time to celebrate. And though we are on virtual, you know, for the last 1 year, I'm sure a lot of members and children and Rotractors have joined today to give you know, to give a good time to all of us, and you know, don't let anyone feel that we are not there together. Let's make the most of this platform, and without taking much time, because I know a lot of people are waiting and have been for their turn, for their body. So we would be quickly running through. I would like to now invite our hostess for this evening, Harpreet Bhatia, and also thank Nitin for coordinating today's meeting along with Ma'am Harpreet Bhatia. Ma'am, over to you. President Sanjay Bhatia ji, Secretary Suchi ji, all the dignitaries, Rotarians, Rotractors, and my dear friends. A very good evening and heartiest welcome to you all on the auspicious occasion of Baisakhi celebration. मैं आज ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਰਣਕਿਉਂ ਵਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ। ਵਿਸਾਖੀ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੱਗ ਝੱਗਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਈ ਕੇ, ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾਏ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास, खालसे मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सतसत संगा। ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਲੀ ਬਿਹੂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਥਾਂਡੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਜਿਸਦੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਚੁਣ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਤਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਛੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਵੇ ਬਾਗ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਸਨ ਖੂਨ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਜੋ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਪਾਈਆਂ ਤਰਥੱਲਾਂ ਨੀ, ਅੱਜ ਵੱਜਦੇ ਕਿਧਰੇ ਢੋਲ ਸੁਣਨ ਕਿਸਾਨ ਪਏ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲ ਦਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਚੱਲਾਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਚੱਲਾਂ ਨੀ। With this now, I would like to invite Rotarian IS Dua ji. Rotarian IS Dua ji. Hello. Good evening. Good evening. Many of the things which I wanted to say and written also have been said, of course, but I'll cut short those one. Dear President Sanjay, Secretary Shuchi, Director Nitin, fellow Rotarians and Rotarians, do hold your breath. You know, next week brings us on the threshold of a very vociferous festival of our land, that is Baisakhi, also pronounced as Baisakhi, which is observed enthusiastically by people of all faiths with a matching forever. It marks the first day of the month of Baisakh and is usually celebrated on 13th or 14th of April every year. Baisakhi is a vernal, historical and religious carnival. This festival is also known as Baisakh Sanskriti. Sanskriti means a word meaning a Kranti brought by our own star, that is the sun, and we celebrate it as our solar new year, based it on the Hindu Vikram Samvat calendar, and for Hindus it is an occasion to take bath in sacred river such as Ganges, Jhelum and Kaveri, visit temple, meet friends and take part in other festival. As told by Harpreet ji also, that it is celebrated in different parts of the countries, in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, in Uttarakhand, in Kerala and Maharashtra. It is additionally a spring festival for many Indians and is celebrated to mark the onset of spring, which is called as a vernal in India. The time of Baisakhi usually signifies the end of the Rabi harvest season and is an occasion of tremendous joy and festivity for farmers.
These celebrations are concentrated in the states of Punjab and Haryana and start with people taking their bath in holy rivers and going to gurdwaras, chief of which are the Golden Temple in Amritsar, the Gurdwara at Anandpur Sahib, where Khalsa was born, Talwandi Sabu, where Guru Gobind Singh Ji decompiled the sacred Guru Granth Sahib Ji. After the prayers, people delved into merriment and dance and sing. The popular phrase Jatta Ai Baisakhi is proclaimed as loudly in neighborhoods as gleeful farmers celebrate a bountiful harvest. Feasts are an integral part of the festival, and the traditional Kala Prasad is a special delicacy. People congregate for lunch at the Gurukul Langar or community kitchen at the Gurdwara, and after a shared meal, take out grand procession of Nagar Kirtan in which devotional songs are played. Khalsa tradition started in the year 1699, as it is on this day, the 10th Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh Ji laid the foundation of Panth Khalsa, that is the order of the pure ones, by baptizing Sikh warriors to defend religious freedom. This gave rise to Baisakhi festival being observed as a celebration of Khalsa Panth formation, also known as Khalsa Sirjan Divas, of course. Of course, that day was 30th March in 1699. Baisakhi is also the day when the British Colonial Empire official General Dyer committed the Jallianwala Bagh massacre on a gathering, an event influential to the Indian movement against colonial rule. When I talk about Baisakhi, I am reminded of a personal encounter with great Punjabi poet Shiv Batalvi in the year 1972, 1 year before he breathed his last. A chance meeting in University Coffee House, Punjab University Coffee House, on the day of Baisakhi, where we asked him to say something on this auspicious day. He, with his rare talent, came out with the lines which have been quoted by Harpreet ji, but these are immortal and are engraved in my memory, and I must reproduce it once again. He said in the coffee house, Baisakhi teri bukkal vich छुपियां होइयां गल्लां ने किदे गबरू पांदे भंगड़े ने किदे कुर्बानी दियां छल्लां ने. This is 1 year before he died. In 1973 June he died, and this is in April 1972. खड़ा गोबिंद सानू दसदा है गल जिस दी नू कान सुन रहे ने खिंडरे पुंडरे हुए पंथ बच्चे कुछ लाल अमोलक चुन रहे ने जिन्ना जांदे धर्म ताई पा दित्तियां सन ठल्लां ने याद आवे बाग जलियांवाला जिथे हड सन खून वगा दिते आजादी दे शोले होर सगों इस खून दी लाली ने मंगा दिते खून डुलिया जो परवाना दा उस पाइयां तरथल्ला नी अज वजदे किथरे ढोल सुनो किसान पाए भंगड़े पाउंदे नी मुटियारां दे गिद्धे लोकां नू सहल दिले तिला उतलांदे ने इस खुशी दी लोड़ मेरा जी करदा है अज नीर वांग मैं चलना नी. Please remember this was composed within 8 minutes by Shiv Batalvi in Punjab University Coffee House, and he narrated it for the first time in 72 there. And it is given in Google also. So that's why I picked up. I know we are going to celebrate this time on Tuesday. This is the second month of Guru Nanak Shahi calendar, not the first month. Our Nanak Shahi calendar, the sixth falls in Chet, that is on March 14th. So this is the second month and the first Sangrand of this one. Sangrand means Kranti brought by sun. Sun is our star with 9 planets. I'm sure that we are all going to celebrate, and in a very ferocious way, by celebrating, of course, with all the precautions which are there due to the corona pandemic, silently, but within our walls, with having best sort of delicacies and lot of Kala Prasad also. Thank you very much, ladies and gentlemen. Significance of Baisakhi is very well narrated by Sir. Now I would like to invite, they will give up their performance, Ananya and Anshuka Vora. Good morning, everyone. My name is Anushka. Today, I'm going to recite a poem on Baisakhi. खुशहाली का त्योहार बैसाखी
ढोल नगाड़े बजते, लहलाती फसल देखकर किसान खुशी से भंगड़ा करने लगते। यह त्योहार है नई उमंग हरियाली का, खुश होकर पंजाबी गिद्दा करने लगते। हर जगह इस दिन गले लगते, पहाड़ पर इस दिन देवी माँ की पूजा करते। बैसाखी में नया काम शुरू कर हर्ष उल्लास से भर जाते। खुशहाली का त्योहार बैसाखी, ढोल नगाड़े बजते। Thank you everyone and wish you all a very happy Baisakhi. क्यों ये कर दे? Sorry. Can you see me now? Yes, sir. I can't see myself. और भी वेखण Sir, you are visible and you are audible. We can listen to. So I'm everything. Anushka just now finished her Yes, yes. poem on We heard Baisakhi. that, sir. Now over to Ananya. Yes, yes. Ananya. Good evening all. एक मिनट My चल। name is Ananya. Today I would be reciting a poem on Baisakhi. देखो है आया बैसाखी का त्योहार, चारों तरफ है छाई फसल की बहार। बल्ले बल्ले है आया बैसाखी का त्योहार, चलो मिलके डाले भंगड़ा यार। अब कटेंगी फसलें हमारी, अब होंगी खुशियां न्यारी। नए साल का वो सवेरा एक भीनी सी खुशबू लाई है, खुशियों से भरा घर आंगन, कई पकवानों की चमक खींच लाई है। देश के कोने कोने में लोगों ने बैसाखी हर्ष उल्लास से मनाई है। विभिन्न भाषाएं, भिन्न रूप, विविधता में एकता की मिसाल दिखाई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Very nice poems narrated by both the girls. Now next, I would invite Ayan Kapoor for the dance performance. आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything. गम तुम भुला दो सारे संसार के। अता पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। अता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Very Very nice. good. Very nice, very nice. And very moody dance. Thank you. Moody dance. Okay, next I would invite
and Parul Bali for her Punjabi song. Parul Bali ji. Excuse me, ma'am, I'm Lakshya this side. Mama will just come in a minute. Okay, Lakshya, you can perform. लक्ष्य के सुना दे तब तक। सर मेरे पास डांस सॉन्ग नहीं। कुछ भी कर दो, गाना सुना दो, डांस कर दो, चुटकुला सुना दो। What will you perform? मैम डांस। अपना फोटो भी दिखा दो। Are you ready? गुड गुड, स्मार्ट बॉय। This one's for you. ऐसी क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा तू 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 मेरी भी मैं तेरा होने लगा। मैं तेरा तू मेरी भी होने लगी। कैसे ये हुआ मगर न है मुझे न तुझको कोई खबर, पर ये दिल तब से है कहने लगा तू 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 मेरी भी मैं तेरा होने लगा। मैं तेरा तू मेरी भी होने। Okay, very well done, Lakshya. Now I will invite Nandita Sisodia ji for her poem recitation. Good evening, President Sanjay Bhatia, Secretary Suchi, dear Rotarians, Rotarians, and all friends who have joined today's celebration, and especially the Bacha Party. So I'm just going to, everybody has told about the significance of Vaisakhi, but I will recite the poem by Subhadra Kumari Chauhan. She has written it on Jallianwala Bagh. Jallianwala में बसंत, जलियांवाला में बसंत की घटना बैसाखी को घटी थी। बैसाखी बसंत से संबंधित महीनों फागुन और चैत्र के अगले दिन ही आती है। The poem goes like, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर पर भ्रम उपजाते, कलियां भी अधकली मिली हैं कंटक पुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है, हाय ये प्यारा सा फूल खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, वायु चले पर मन चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, लाना संग में पुष्प ना हो वो अधिक सजीले, वो सुगंध भी मंद ओस में कुछ बहुत कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ा बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधकलियां यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु में ओस बसाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प तुम यहाँ गिरा देना तुम जाकर वहां पर, ये सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान तुम बहुत धीरे से आना। थैंक यू। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट I would invite Arnav Luthar for his performance. Arnav Luthar. Okay. हाँ जी हाँ।
Arnold Luther, now calling. Okay. Come on. नहीं छोड़ेंगे अगर मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे. Very good. Thank you. No, thank you. Very nice, sir. Akshat Luther will come. Akshat. Now Akshat Luther. Go on, start. Very good. आंखें जो तेरी देखी. Very good. Very nice. Oh. Very nice. Wow. Very good. Thank you. Very nice. Very nice. Very nice. Thank you. Very Thank you. good. Very good. Thank you. Very good. Very good. Bye. Very well played. Very good. Very nice, guys. Thank you. Very nice, very nice. पर बेटा इस गाने की लाइनों के मीनिंग आते हैं? Thank you for giving us a क्या बात है. chance. उसको आते हो क्या या आपको बात तो है, आते हैं. क्या बात. धन्यवाद. Excellent. Oh, Very good. God bless him. Parul ma'am, I चलिए will कपड़ा say. जी, उसको नहीं मतलब आते हैं, आपको तो आते हैं. Harpreet ma'am, Parul bhabhi is there, I guess. She's raised her hand. आजकल बच्चे बहुत तेज हैं, वो हमसे ज्यादा समझते हैं. आ गया, मजा आ गया ना. हाँ, मजा आ Next, गया. Parul ma'am. अच्छा, आ गया ना. देख कहाँ तक पहुंचे, मुझे कहाँ तक. हम सुन रहे हैं. Parul ma'am. देखे कुछ Ready? तेरा पता है ना, पॉलू बना था जब पैदा होते ही. Thank you. चले. Raised the hand. Sanjay is looking very smart today. Sanjay is looking very smart today. सलील का बैकग्राउंड बिल्कुल वाला है. Thank you. सलील, how do you manage it? आरजे की पाई जैकेट बड़ी बढ़िया पाई. Thank you जी. Okay, next. Retractor Shubhangi will sing a song. अच्छा है ना. Retractor Shubhangi. Shubhangi. Good evening, everyone.
ਲੱਠੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ आवो सामने कोलो भी रुस के ना लंग माहिया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलो भी रुस के ना लंग माहिया जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया जिन्ना रहा दी मैं सार ना जाना उन्नी रही वे सानू मुड़ना पिया होनी रही वे मैनू मुड़ना पिया. And this song reminds me of my mom. Because she liked. You know the meaning of Kasuri? हाय ओ मेरे डाडे रब्बा के ना जमिया किन्ना ने ले जानिया है हाय ओ मेरे डाडे रब्बा के ना जमिया किन्ना ने ले जानिया है मधानिया हाय ओ मेरे डाडे रब्बा के ना जमिया किन्ना ने ले जानिया है हो चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते कुंडा लग गया बारी नू कुंडा लग गया बारी नू हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू. Thank you. Very nice voice. Very sweet. Very nice, Shubhangi. Very nice. Keep it up. Very nice. बहुत अच्छी आवाज है आपकी. Thank you, ma'am. आवाज भी अच्छी. Choice of songs was very good. Yes. सब कुछ लय में है, लय में. Harpreet ma'am, Parul ma'am is there. I think now we can give her chance. नहीं क्या Parul ma'am. हाँ बीच में कर रहे हैं बैठ जाते हैं और मेरा अच्छा लगा बहुत सब अच्छा लगा Parul ma'am. हाँ डोंट वरी यू विल सी उन्होंने सारे के सारे गाने गाए हैं तो मैं विशाखी को पसंद आया बहुत बढ़िया यू विल गेट द प्राइज Parul ma'am, जब उनका नंबर आता है तो वो चली जाती है. जब पार्टी में अच्छा लगता है ना तुम छुप छुप के बैठती हो और वो भी अच्छा लगा अच्छा ना. Parul ma'am. हाँ मैं गा रही हूँ. बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुसिया जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुसिया जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा असां सुनिया
असा असा सुनिया वे कलकत्ते पईए छावनी मेरे जोगा टिका मेरी सौकण जोगी दामनी सौकण मर जाना मुड़ के असी होई हंडावनी बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुसिया जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा असां सुनिया वे असां सुनिया माया लौर शहर मंगिया सौकण मेरी दा डोला मेरी बारी थाई लंगिया बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुसिया जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया बाजरे दा सिट्टा। थैंक यू। Very nice as usual, ma'am. Very nice. ठीक है माया आंसर नहीं देना आज मैम। ठीक है। Next, Dr. Sanjay Kalra ji. I would like to invite him. Sanjay Kalra ji. Abhi again he is missing. Okay, let's take the next one, Harpreet ma'am, in the meantime. Okay, ma'am. Next, Rotaract Club of Samaritan, they will perform basics of Bhangra. Yeah, so Saksham is going to speak first. Rotractor Saksham, are you there? Yeah, good evening, everyone. Actually, my friend Prag will go first, so let him invite over here. Okay, Good evening to all. Good evening to all. Now I will be telling about how our folk dance Bhangra is associated with the Vaisakhi. Bhangra was mainly done by Punjabi farmers during the harvesting season. It was mainly performed by farmers did agriculture's activity. As they did each farming activity, they would perform Bhangra moves on the spot. This allowed them to finish their job in more pleasurable way. After harvesting their wheat crops during the Vaisakhi season, people used to attend cultural festivals while dancing Bhangra. For many years, farmers performed Bhangra to showcase a sense of accomplishment and to welcome the new harvesting season. Now I hand over to Saksham. Thank you, Prag. Before starting, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਭੰਗੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਡ 1800s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਡਾਂਸ ਟੂ ਦ ਢੋਲ ਐਜ ਅ ਲਾਰਜ ਡਰਮ ਐਂਡ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲਵ song in a short form to express love. The regional connection between Bhangra and Punjab is like this. The Bhangra is an amalgamation of various folk dances all across the region of Punjab, many of which we can trace the root far back from the existence, that is from 1800s. Main steps ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ, ਗਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਕੋਟ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਗ ਦੱਸੂਗਾ ਸੈਲਕੋਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਕ
ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ region to develop ਹੋਇਆ ਹੈ, and it is the step which is performed with one leg in the air. And ਝੂਮਰ from the Jung Sial, it can be traced from the back to the Aryan period and consists of a 18-beat toll cycle. ਹੁਣ like ਜਿਵੇਂ ਸੰਮੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, it is dedicated to the singing about a fabled girl. In the 1940s, communication between the villages and regions in the Punjab sharply increased due to the independence movement across the area. As a result, due to several celebrated dance pioneers, these dances were shared both in times of celebration and in the time of hardship. Each region quickly adapted the shared dance form into their own folk traditions. Traditionally, eventually, a standard Bhangra routine across Punjab came to consist of certain components such as Chumar segment or the Tamal segment. Due to exponential rise in communication in Punjab and across India, Bhangra spread throughout the country and also throughout the world. Thank you. बहुत बढ़िया दीदी थी। Sorry, Harpreet, Bhabhi, we have the dance now. Can I share the screen? So from Rotaract Club Samaritans, we have Bhangra dance from Muskan. So fine. Yeah, here you go. Let me just ensure that the sound, share computer sound, and here we go. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, 12 ਸਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ। ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। Very nice Bhangra by Muskan. We have a very small clip, just one more which. ਅੱਡਿਆਂ ਟੋਕੇ ਪਾਈਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਅੱਡਿਆਂ ਟੋਕੇ ਪਾਈਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ। ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ। Okay, next, Rotaract Club of Khalsa College. Lisha. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Today I'm going to present a short poem on Baisakhi. Here I go.
झूम उठा है संसार सारा, आया खुशियों का त्योहार है। सब किसान भाई देख फसलें अपनी, काटने को तैयार हैं। बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब में अलग ही उल्लास है। आया खुशियों का त्योहार, भाइयों बैसाखी का त्योहार है। नव वर्ष की खुशियां हैं छाई, प्रकृति भी बच्चों को देख है मुस्कुराई। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई, आई बैसाखी आई। From my side to all, a very, very happy Baisakhi to you all. Thank you. Very nice poem. Nice poem. Next, Sanjay Kalra is there, if we can call him. Bhabhi? Okay, Dr. Sanjay Kalra. Next, he will perform. Yes. Sanjay, please, have you unmuted yourself? Yeah, now, can you hear me? Yes, yes. Okay, now we are going to present a medley of songs. भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहती नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा दिया क्या। मिट जाए गम और सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। पूजा तो नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने वाली नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। सोना बचाओ वरना भी जाग जाएगी। चार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा
यार आ रहा है तेरा प्यार। हम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ गम अभी जा भी जाए एक बार। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। Yay, very nice. Vaibhav will continue with the Punjabi song. जावो नी जावो कोई मोड़ ले आवो नी मेरे नाल गया लड़के अल्लाह करे आ जावे सोना तेर देवा जान कदमा विच कर चला बैरी बूहे बेवतन माहिदा दूरे बे जाना पहली पूरे बेगल सुन चलिया शोरा कादा लायई जोरा ला 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 छल्ला नोनो देवे छल्ला नोनो देवे छल्ला नोनो देवे पुत्र मिठड़े देवे वे रब्बा सबनू देवे वे गल सुन छलिया कांबा ते मां बा ठंडियां शामां ला 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 छल्ला बेरी बूहे छल्ला बेरी बूहे छल्ला बेरी बूहे वतन माया दूरे जाना पहले पूरे गल सुन चलिया शोरा दादा लाई जोरा ला 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 ओ छलकते तरिए छलकते तरिए छलकते तरिए सच्चे रब तो डरिए मिठियां तरिए बेगल्ला मिठियां तरिए बेगल सुन चलिया टोला बे रब तो का जाए ओला ला 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 चला कालिया मिर्चा चला कालिया मरचा चला कालिया मरचा मोरा पी के मरसा चढ़े तेरे चढ़ सा गल सुन चलिया डोला सा दिल गई ओला la 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 la. Very nice, very nice. Awesome. Obvious performance. Very nice, very nice. समा बांध दिया और सबको स्तब्ध कर दिया. Melodious sir. Yes, ये हमारा. Vaibhav. Thank you, Vaibhav ji. Next, Palak from Rotaract Club of Khalsa College. Palak will sing a song. Yes, please. Yes. मैं कागज दी बेड़ी रब्बा तू मैनू पार लगाया
शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कहीं तेरा तो नंगे फिर दे सिर ते लबन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। सोखा किता सहादा, सोखा किता सहादा, सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। थैंक यू everyone. Very nice, Palak, very nice. Thank you, ma'am. Next, Riya. मेरा नंबर है भी कि नहीं? Riya. Riya, yes. Good evening. I would like to recite a poem. The day Guru Gobind Singh turns sparrows into eagles, the day the all people of all castes stood up and were equals to kings, the day we realized the power of five, the day we were given the 5 pennies to listen and read, the day that transformed us to see all as equal. Remember the true meaning of Vaisakhi amongst the crowds and food. If you can ask the Gurudwara to donate vast amount of food to the homeless soon, the celebrations will disappear, but continue to celebrate in spirit every day the creation of the Khalsa. Let it always within your spirit be always fearless within your heart to do the right thing, no matter how hard it gets. Celebrate always with you. Happy Vaisakhi to all. Thank you. Very nice, Riya. Next, Samriddhi. Samriddhi will perform. Samriddhi. Good evening, everyone. Today I'm going to sing a song. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तुमकी रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Thank you and wish you a very happy Vaisakhi. Very nice. Very nice song. Very energetic and active performances by all the Rotractors. Now moving to the next, I would like to invite Dr. Rita Kalra. Dr. Rita Kalra for her performance. थैंक यू हरप्रीत जी। मैं ना परफॉर्मेंस से पहले एक बहुत सुंदर सा वीडियो है शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गया रोटरी में, और मैंने हर बैसाखी बीर मैम के साथ ही मनाई है। तो ये देखो बहुत चांस की बात है
We are just praying she'll be back. मुझे उसमें कोई doubt नहीं है. But we already have her video specifically for Baisakhi, and she had sent me for my daughter-in-law. So I'm sharing it. मधानिया हायो मेरे डाडिया रबा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया हाय हायो मेरे डाडिया रबा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया फीता इना सकिया पापिया ने डोला तोड़ के कच्चा दूध पीता है इना सकिया पापिया ने डोला तोड़ के कच्चा दूध पीता है लोई बाबल तेरे मैला विचों तेरी लाडो परदेसन होई है बाबल तेरे मैला विचों तेरी लाडो परदेसन होई चूड़ियां Solid masti